Yes, So very good evening, all the participants. Today, we would like to see some of the provisions in various case laws. But one thing you have to remember that these case laws may or may not be in the syllabus. The idea of going through the issues which were involved in these case laws is that we should be able to attempt the case studies if some of the situations which have been described in these case laws come in the examination. So first is Edelweiss Asset Reconstruction Company versus Synergis Dure Automotive. Now what was the issue here? The issue here was that the Synergy Dure, it was undergoing CIRP. Now Edelweiss Asset Reconstruction, as you know, these asset reconstruction companies, they come into the picture whenever a financial creditor assigns the debt to them. And because of this assignment, sometimes the ratios in the COC changes. So here, Edelweiss Asset Reconstruction Company, they challenged the resolution plan, arguing that it involved a substantial haircut on the outstanding debt owed to them. Now they allege that a related party, Synergies Castings and Millennium Finance, colluded to assign a significant portion of the debt affecting Edelweiss voting rights in the COC. So what they did, there was a related party, and you know, related party cannot come into COC. But suppose they assign their debt to an unrelated party, because assignment as such is not barred even during CIRP. They can ask you this question also, that whether assignment can be done during CIRP. The answer is yes. So here the issue was that a related party was there. Okay. Synergies Casting and Millennium Finance. So they alleged that Edelweiss Asset Reconstruction Company alleged that the related party, Synergy Casting and Millennium Finance, they colluded to assign a significant portion of the debt affecting earlier Edelweiss was having more voting share. But because of change in the dynamics, because of this assignment, naturally, because total is 100 always. So voting share total is 100. So if another unrelated party comes, because earlier Edelweiss was having more share, but now because of this assignment, which is not barred during CIRP, their voting share changed. The related party, SCL, could not have been a member of the COC, but the assignee, MFL, could. So what they did? Synergies Casting was a related party, and the Millennium Finance was a unrelated party. So as Synergies Casting assigned its debt in favor of Millennium Finance. So as a result, the share of Edelweiss Asset Reconstruction Company was reduced. Now what was the NCLT's decision in this case? So the NCLT, after examining the records, found no relationship between Synergies Casting and Millennium Finance, thereby validating MFL's participation in the COC. So they said, because it was an allegation only that Synergies Casting is a related party and MFL is an unrelated party, because they have assigned their debt in favor of MFL. So that is why our interest is hampered. But NCLT did not found any relationship between SCL and MFL, thereby validating MFL's participation in the COC. They approved the resolution plan, which included a merger and amalgamation proposal, finding it met legal and moral requirements, particularly concerning the dependent families and the timely nature of the resolution process. So NCLT viewed the debt assignment as akin to tax planning rather than tax avoidance. So what they said? They said it is tax planning and it is not tax avoidance.
Now the matter went in appeal to NCLAT. So Edelweiss appealed this decision to the NCLAT, and NCLAT they rejected the Edelweiss appeal, upholding the NCLAT's decision. They found no issue with the merger and amalgamation proposed in the resolution plan. So another aspect, whether amalgamation and merger could be proposed, the answer is yes, stating that the IBC allows for such proposals. So assignment is allowed, merger and amalgamation is allowed during the CIRP period. The NCLAT also did not find any problem with the debt assignment. So they said even debt assignment is okay. So this case was crucial as the first instance of a resolution plan being approved under the IBC. It also addressed the issue of related party debt assignments and their impact on the COC composition and voting rights. NCLAT's decision clarified that resolution plans can include merger and amalgamation proposals. Okay? So this case, it brought to light several key issues within the framework of IBC. These issues revolved primarily around the conduct of the CIRP and implications of related party transactions on the committee of creditors and the eventual resolution plan. So what are the learnings out of this? First learning is assignment during CIRP is allowed. Amalgamation and merger could be suggested in the resolution plan. And the debt assignment, if it is resorted to and it is by way of tax planning, it is allowed because it is not tax avoidance, it is tax planning. So Synergies Casting, it was a related party of the CD, and they assigned a significant portion of its debt to Millennium Finance just before the IBC came into effect. This assignment was questioned by Edelweiss Asset Reconstruction Company because related parties are typically excluded. This we all know. So the core issue was whether the assignee, being a non-related party, could become part of the COC and wield significant voting power, potentially influencing the resolution process. Edelweiss argued that the assignment was a sham transaction and a fraud perpetrated on the creditors to dilute their voting rights. But NCLT and NCLAT, however, found no evidence of a relationship between SCL and MFL. So the relationship is to be seen between the party who is assigning the debt and to whom the debt is assigned. Because the debt was assigned by Synergies Casting in favor of Millennium Finance, so there was no evidence of relationship and the assignment was deemed legal, stating that the MFL was eligible to participate in the COC. Edelweiss Asset Reconstruction Company, they challenged the resolution plan, arguing that it involved a substantial haircut on the outstanding debt owed to them. So another related question is whether haircut is allowed during CIRP. The answer is yes. The resolution plan involved lenders taking a significant haircut, raising questions about the fairness and efficacy of the IBC in maximizing creditors' value. NCLAT, however, upheld the resolution plan, noting that it was approved by the COC with the required majority and included a merger proposal which is permissible under the IBC. Insolvency resolution professionals' roles and responsibilities. So this Edelweiss also raised concerns about the conduct of the IRP, alleging that the IRP did not properly investigate the debt assignment and failed to address their objections. So the question here is, in case there is debt assignment, whether allowed? The answer is yes. It is allowed during CIRP. There is no bar. But if anybody raises the objection, then you have to satisfy him naturally. NCLT, however, upheld that the IRP's powers under IBC are limited and do not extend to resolving disputes between creditors. So this is another issue. If there is any dispute, then it has to be referred to the NCLT, and this IRP is acting in an administrative capacity only. He is not an adjudicator. He is not acting in the capacity of in an adjudicatory capacity. And if there is any dispute,
between creditors, then NCLT is the authority to resolve such disputes. In a sense, the case highlighted the critical issues of related party transactions and their impact on COC formation and voting rights, the extent of haircuts taken by the creditors in resolution plans, and the scope of the IRP's powers and responsibilities within the IBC framework. While the NCLT and NCLAT upheld the resolution plan and the debt assignment in this case, the controversy sparked discussions about potential amendments to the IBC to address these issues and strengthen the insolvency resolution process in India. So this was the case. So it enlightens us on various aspects. Although it may, I don't know whether it is in our syllabus. Whether it is in our syllabus now, NCLT judgment, Synergy Dure, सुधाकर जी. नहीं सर, देखना पड़ता है सर. आई लेट यू नो सर. अरे आपको तो 5 दिन बाद पेपर है, आपको याद होना चाहिए सब बातें हैं सर. और क्या आपको भी देखना पड़ेगा तो कैसे काम चलेगा. इट शुड बी ऑन योर टिप्स. कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ. जस्ट अ मिनट, और बढ़िया रहेगा. मैंने वो रेजोल्यूशन प्लान वाली वो तो दे ही रखी ना आपको, न्यू केस लॉज वाली. ये न्यू केस लॉज की सीडी मैंने आपको दे रखी है. ये सुप्रीम कोर्ट हो गया आपका, ये हाई कोर्ट है, और ये एनसीएलटी. इसमें ये है 5 मिनट. ये पुराना केस था, एक्चुअली हटा दिया होगा मेरे को लग रहा है ये. मैं बताता हूँ सर, मैं देख रहा हूँ सर. हाँ अभी नहीं है, कोई बात नहीं. चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं. कलिंगा अलाइड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स. बट हमारा पर्पज यहाँ वो नहीं है. हमारा पर्पज ये है ही नहीं कि सिलेबस में है. वी आर नॉट डिस्कसिंग इट सिलेबस वाइज, वी आर डिस्कसिंग इट इशू वाइज. ठीक है. इट इज नॉट देयर सर. इट इज अरे नॉट हाँ देयर. हाँ, कलिंगा अलाइड इंडस्ट्रीज वर्सेस कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स. सो दिस वाज द केस which was finalized by NCLT. So what were the issue? The COC had previously approved a resolution plan for Bindal Sponge Industries Limited. Adjudicating authority later directed the RP to consider a new resolution plan submitted by Hindustan Coils Limited, a third party who had not participated in the CIRP earlier. So first question comes, in case a party has not earlier participated in the CIRP process, so at what stage a resolution applicant can enter? ठीक है. The law says that in case his name is not there in the list finalized, so then he cannot enter the process. So Kalinga Allied Industries, who was the successful resolution applicant, they challenged the NCLT's order. ठीक है. So COC had previously approved a resolution plan for Bindal Sponge Industries, and adjudicating authority, they later directed the RP. Sometimes the unsuccessful resolution applicants, they approach the adjudicating authorities or appellate authorities that okay, these were some of the issues involved, and at times the adjudicating authority, in this case, they directed the RP to consider the resolution plan submitted by Hindustan Coils Limited, which was challenged by the earlier successful resolution applicant. ठीक है. COC has approved. In the meantime, unsuccessful resolution applicant, he approaches adjudicating. Now the issue was, the core issue before the NCLT was, can the COC, after approving a resolution plan and the same being submitted to the adjudicating authority, seek to withdraw its approval? Because once COC, once it has given the approval, whether it can withdraw and consider a fresh resolution plan from a third party who did not participate in the CIRP, especially after a significant time has elapsed. So this was the core issue involved in this case. Now what was the NCLT's decision? The NCLT set aside the NCLT's order.
and held that a resolution plan, once submitted to the adjudicating authority with the requisite majority approval from the COC, is binding and irrevocable between the COC and the successful resolution applicant. The existing insolvency framework does not allow for further modifications or withdrawal of COC approved resolution plans, because some other cases are also there like Kundan Care and Epic Singapore. So in those cases also, this was the issue that once a plan has been approved, resolution plan has been approved by the COC, whether it can be withdrawn by the resolution applicant, and the Supreme Court answered in the negative. So it says the existing insolvency framework does not allow for further modifications or withdrawal of COC approved resolution plans at the behest of the successful resolution applicant once the plan has been submitted to the adjudicating authority. Adjudicating authority cannot direct the COC to consider a new resolution plan from a person who was not part of the CIRP proceedings, particularly when statutory timelines have expired. Now, this question can be asked in the exam also. It could be by creating a situation also. So, a case study could also be framed on such issues. Maximization of asset value, while a goal of the IBC, must occur within the specified timelines. So, if the timeline has already expired, then you cannot, on the pretext of this maximization of asset value, go on entertaining the new resolution plans. In a sense, the NCLAT affirmed the finality of an approved resolution plan and the importance of adhering to the CIRP timelines, preventing the reopening of the process to accommodate late offers from non-participants. Okay? Now, another question could come here. Suppose COC has approved a resolution plan, but the timeline is not over. Suppose 180 days have not yet expired. Then what will be your answer? Because it says, particularly when the... It can be accepted, sir, till the vote of the COC, sir. No, suppose... Till the acceptance of the COC, sir. No, that is true. But suppose COC has already approved a resolution plan. In the meantime, and they have not yet submitted it to the adjudicating authority. In the meantime, a new resolution applicant comes which offers better terms. And the COC says okay. Then whether COC can entertain? Yes, the new plan can be entertained there. They can entertain by again following a resolution or voting of the resolution plans. दोबारा वोट करना पड़ता सर. Actually, there are 3-4 issues. Number one, whether the approved resolution plan has been submitted to the adjudicating authority. In that case, the ball has already moved from the court of COC to the court of adjudicating authority. In that case, COC will not be able to do anything. Another situation, COC approved, but timeline is still there. Time is still there. And a new resolution applicant, he offers a better terms. So then it could probably be the call of the COC. But we will see some other case laws also. New applicant मतलब वो earlier non-participant, sir, उन्हों भी? नहीं, earlier not participant, तो then he will not be allowed in any case. Yes, sir. Participant होना चाहिए. Participant तो होना चाहिए. हाँ. ठीक है. चलिए, next case देखते हैं. Parag Das, Mathura Das versus Jeevan Lal Limited. So what is this case? Actually, it was the case of a breach of contract decided by the Judicial Committee of the Privy Council in 1948. Okay. The plaintiff Jeevan Lal Limited had contracted with the defendant Parag Das Mathura Das to buy 40 tons of Penang quality tin. Okay. इनका आपस में purchase agreement था. However, after the contract was made, war broke out with Japan and Penang was occupied by the Japanese. ठीक है. The defendant was consequently unable to obtain the tin from their supplier in Penang and refused to deliver the goods to the plaintiff, citing the unforeseen circumstances. The plaintiff
sent the defendant for breach of sued the defendant for breach of contract, seeking damages. So the issue was whether the contract was contingent upon the arrival of the tin from Penang, and whether the doctrine of frustration of contract applied in this situation under the Indian Contract Act. Now, the reasoning was the court found that the contract was not contingent on the arrival of the tin specifically from Penang. The defendant had therefore breached the contract by failing to deliver the tin. The court also found that the doctrine of frustration under Section 56 was not applicable in this case. The court emphasized the need to consider the specific terms of the contract and the implied conditions involved. So finally, the decision was the court allowed the plaintiff's appeal and awarded them damages for breach of contract. Okay. So this case demonstrates the importance of clearly defining the terms and conditions in contracts, particularly when dealing with uncertain or potentially volatile situations. So they said that, okay, tin is available, otherwise also. Rakesh Rajpal versus RP Rajpal Abhikaran Private Limited. So what is this case? So this appeal challenged an order passed by NCLT Indore branch. An NCLT order had approved a resolution plan submitted by Agarwal Real City Private Limited for the corporate debtor Rajpal Abhikaran Private Limited. The CIRP was initiated against Rajpal Abhikaran Private Limited based on an application filed by Chandrodai Automobiles Private Limited and OC for an amount of 69 lakhs. Now, what was the key issue involved? The appellant Rakesh Rajpal raised an issue regarding the non-provision for payment of VAT dues of the Department of VAT of the state of Madhya Pradesh in the approved resolution plan. Okay? So this was the case. Now, what was the argument? Appellant's argument. The appellant Rakesh Rajpal referred to the Supreme Court's decision in the case of State Tax Officer versus Rainbow Papers. Because in case of Rainbow Papers, as you know, this case is in our syllabus also, State Tax Officer versus Rainbow. So here the Supreme Court said that the Gujarat VAT authorities is a secured creditor. So they recited this case of State Tax Officer versus Rainbow Papers and argued that the controversy in the present case was covered by this decision, implying that the VAT dues should have been included in the resolution plan. So we'll explore more on this. Sikandar Singh Jamuwal versus Vinay Talwar, resolution professional. So the case of Sikandar Singh Jamuwal versus Vinay Talwar is a significant judgment concerning the priority of provident fund dues under the, because this provident fund dues is also an issue which is there in various cases. So Sikandar Singh Jamuwal, he was an ex-employee. He challenged the resolution plan of Vinay Talwar, the RP. Vinay Talwar was the RP and Sikandar Singh Jamuwal was an ex-employee. So the issue was the resolution plan's failure to fully address PF dues as required by the Employees Provident Fund Act. And what was the appellant's argument? The appellant argued that the plan was discriminatory towards employees and violated the EPF and Miscellaneous Provisions Act. Arguments also included disparities in payment to creditors and concerns about the resolution applicant's eligibility and potential related party involvement. Now, what was the NCLT decision? NCLT ruled that PF dues are not part of the corporate debtor assets or the liquidation estate. So as we know, as per section 36, so whatever are the PF dues, they do not form part of the liquidation estate. So they have to be kept outside the corporate debtors assets and they are not available for distribution. The tribunal stressed the need for statutory compliance in insolvency resolutions, particularly for employees' PF dues. NCLT directed the resolution applicant to pay the full PF and interest according to the PF Act. The resolution plan was modified to incorporate this directive.
The ruling highlighted that statutory dues like PF dues take precedence over resolution plans that may seem financially balanced. So Supreme Court upheld the NCLT's decision by dismissing the SLP. So this judgment confirms that PF dues are not debts under Section 53 and emphasizes the importance of statutory compliance in insolvency proceedings, especially regarding employee PF dues. We will see some other cases also regarding PF where it has been held that not only the basic amount due but the interest also, everything is outside the liquidation estate. Like in one case, it was argued that okay, basic amount is covered, but interest is not covered, and interest is to be claimed as operational creditor. But the Supreme Court said no, everything is fully covered. SREI Infrastructure Finance Limited versus, so there could be questions which could be asked on PF dues. So PF dues could be another area where a case study could be framed, or it could be a part of the case study. SREI Infrastructure Finance versus Ashish Chacharia, RP Odisha Slurry Pipeline Infrastructure Limited. So what was the case? The case involved an appeal filed by SREI Infrastructure Finance Limited against an order of NCLT that approved a resolution plan for Odisha Slurry Pipeline Infrastructure Limited, the corporate debtor. Now, what was the challenge? SIFL was a secured financial creditor. They challenged the resolution plan, arguing it was discriminatory, extinguished their right to proceed against guarantors, allowed abatement of a title suit, and failed to consider outstanding usage charges from Essar Steel India Limited. The resolution plan submitted by ArcelorMittal was approved by the COC with a 100% vote share and subsequently by the adjudicating authority. But SIFL, which was a secured financial creditor, they challenged the resolution plan. Now, what was the NCLT's decision? NCLT ultimately dismissed the SIFL appeal, upholding the adjudicating authority's order. So, what were the reasons? First was the commercial wisdom of the COC. NCLT emphasized the paramount importance of the COC's commercial wisdom in approving a resolution plan, citing relevant Supreme Court judgments. And NCLT found no discrimination against SIFL, noting that all financial creditors received 100% of their principal amount and that differences in recovery percentages were due to varying interest components. Binding nature of the plan. NCLT highlighted that once a resolution plan is approved, it becomes binding on all the stakeholders, including creditors. Extinguishment of guarantees. NCLT reasoned that the COC's decision to extinguish the right to proceed against guarantors was a matter of commercial wisdom and not subject to interference. There are many cases where in the resolution plan, the personal guarantors say that you extinguish the right to proceed against the guarantors. As per Indian Contract Act, the liability of the guarantor is coextensive with that of the borrower. And in case recovery is not possible from the principal borrower, they can proceed against the guarantor also. But here, sometimes the resolution applicant insists that okay, we are ready to give you something extra provided our guarantee right is, the right to invoke the guarantee is extinguished. And if COC agrees to it, then it is not challengeable. In a sense, the NCLT's decision in this case reinforces the principle of the primacy of the COC commercial wisdom in the CIRP process, provided the resolution plan complies with the provisions of IBC and its regulations. So this question of guarantee is also important. So they may cite a situation that in the resolution plan, the resolution applicant agrees for a separate amount of say 20 crores in case the right of invocation of guarantee against the
Guarantor is itself is also a resolution applicant. So they say, sometimes they will say that, okay, you extinguish this right and we'll pay you something extra. And if COC agrees, then it is not challengeable. So extinguishment of the rights to proceed against the guarantor. This could also be the issue covered. Vikas Agarwal versus Asian Color Coated Ispat Limited. So what is this case? Financial creditors retain the right to proceed against personal guarantors even after a resolution plan for the corporate debtor has been approved. Now this situation is different. A resolution plan is not talking about the personal guarantors. In case specific discussion has taken place that, okay, you extinguish this right and we'll pay you this much amount, then it's okay. But if there is no such discussion on the personal guarantors, so then financial creditors retain this right to proceed against the personal guarantors even after a resolution plan for the corporate debtor has been approved. So personal guarantors are bound by the approved resolution plan under section 31 of the IBC. In the context of the IBC's objective of reviving the corporate debtor, the right of subrogation for the personal guarantors may not survive. Now, what is this right of subrogation? The right of subrogation says that in case a payment has been made by the corporate debtor, then the surety steps into the shoes of the creditor. So that is not here. That right of subrogation is not allowed. Okay? So there could be a question on this right of subrogation. So Sudhakar ji, we can talk separately tomorrow at some time, say around 4 to 5, between 4 to 5, or I'll call you so Yes, that we can, so we can issue some, we can discuss some of the issues Thank which you would so come much, sir. in the case studies. Thank you, है sir. ना? The extinguishment of personal guarantors right of subrogation while differing from the Indian Contract Act is considered necessary in insolvency cases to align with the IBC's spirit. The NCLT reasoned that this is crucial for the corporate debtors revival and the financial creditors' interests. Section 238 has an overriding effect, meaning personal guarantors cannot use the subrogation provisions of the Indian Contract Act to claim relief. So this can also be a question. So whether the right of subrogation will be allowed, the answer is no. Okay? Because of the provisions of section 238. The judgment highlights the priority of approved resolution plan under IBC and clarifies that personal guarantors' liabilities to financial creditors remain even if it departs from contract law principles concerning subrogation. Next case is Vishal Vijay Kalantari versus Shailen Shah. Now, what is this case? It refers to a legal dispute under the IBC, specifically concerning CIRP of Dighi Port Limited. So, appellant, this Vishal Vijay Kalantari, he was the promoter. He was representing the CD. And respondent, the Shailen Shah, was the RP. So, CD versus RP. So, CIRP for Dighi Port began in 2018. A resolution plan proposed by Adani Ports and SEZ was approved by the COC and the NCLT. Vishal Vijay Kalantari, promoter, challenged this approval. Okay? So one of the promoters challenged this approval of resolution plan. Now what was the key issue? One was the lack of Competition Commission of India approval. Because as we know, once a resolution plan is hit by section 5 of the Competition Act. What this section 5 says of the Competition Act? It says that if the proposal results in monopoly situation, then prior approval of COC is required. This is the case. Just a minute. Hello?
नमस्कार सर जी, मैं क्लास में हूँ एक्चुअली, मैं थोड़ी देर में करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। So the key issue was lack of Competition Commission of India approval. So Kalantari argued that the resolution plan was invalid because it didn't have the necessary approval from the CCI. So this reference you will find in section 31. So what section 31 says, and there is an amendment also here. So now it says you get prior approval of CCI. Okay. This is given in section 31 proviso. 31(4) proviso, provided that where the resolution plan contains a provision for combination as referred to in section 5 of the Competition Act. So I have briefly described what is this section 5. Section 5 talks of monopoly situation. Earlier there was MRTP Commission, you might be knowing. Then this MRTP Commission, Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission. Then it was made into a Competition Commission of India. So section 5 is talking of monopoly situation. So they say the resolution applicant shall obtain the approval of the CCI under the Act prior to the approval of such resolution plan by the COC. Okay. So on this ground it was challenged. Okay. Rejection of settlement proposal. Kalantari also challenged the COC's rejection of a settlement proposal under section 12A. Now this is another issue. This issue has come in some other cases also. Suppose sometimes the COC rejects a settlement proposal. Sometimes the settlement also comes at the last stage. By on the one side, you are just about to approve the resolution plan, and then the CD comes because this was the application filed by the promoter. So they challenge that the COC has rejected our settlement proposal under section 12A. This proposal aimed to withdraw the insolvency proceedings. Okay. So NCLT ruled in favor of the RP and COC, upholding the approval of the Adani plan and dismissing Kalantari's appeal. NCLT emphasized that the COC's commercial wisdom in evaluating resolution plans should not be interfered with. Then Supreme Court. Kalantari further appealed to the Supreme Court, this promoter. Okay. So right of subrogation and now this Competition Commission of India. There are two issues basically in this case: Competition Commission of India approval and section 12A application at the fag end. Okay? When one of the resolution plan is going to be approved, at that time the promoter puts in section 12A application. So Kalantari further appealed to the Supreme Court. Supreme Court upheld the NCLT's decision and dismissed Kalantari's appeal. A subsequent review petition was also dismissed. So this case is considered significant for highlighting the issues of unnecessary litigation by promoters seeking to delay or derail the insolvency resolution process. It reinforces the principle that the commercial wisdom of COC should be respected by the adjudicating authorities. NCLT characterized the promoter's actions as attempt to frustrate the resolution process. ठीक है, तो चलिए ये ओवर हो गई हमारी। अब इसके अलावा कुछ और इश्यूज देख लेते हैं। अब हमने इसमें कौन कौन से इश्यूज देखे? इसमें जो हमने इश्यू देखे वो हमारे इश्यूज थे, सबसे पहला हमारा क्या इश्यू था? असाइनमेंट ऑफ डेट का। ठीक है, तो वेदर असाइनमेंट ऑफ डेट इज अलाउड? निशा जी बताइए, ड्यूरिंग CIRP whether assignment of debt is permitted or not? Sir, it is permitted. Yes, it is permitted. Second point was regarding PF dues. So whether PF dues have to be paid in full or there can be haircut to PF dues also. No, it has to be paid in full along with charges. Right. So PF dues along with charges, interest, they have to be paid in full because they are not part of the liquidation estate. Extinguishment of the right to proceed against the guarantor. So in case the COC, in exchange of some consideration, they agree
टू एक्सटिंग्विश द राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट द गारंटर। ठीक है, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बोल रहा है कि भाई आई विल पे यू 20 करोड़, बट ये जो आप गारंटी मत इन्वोक करना। ठीक है, एक ट्रस्ट वाला केस भी है, वो सिलेबस में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो वेदर सीओसी कैन एग्री टू एनी सच कंडीशन और नॉट? No. इट कैन। यहां कमर्शियल विजडम देखो, उसके लिए कोई कंसिडरेशन होनी चाहिए। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो नहीं एग्री कर सकते, अगर कंसिडरेशन सेपरेटली दे रहे हैं तो एग्री कर सकते। अगर कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ तो फिर राइट रहेगा, दैट राइट विल रिमेन टू इन्वोक द गारंटी। ठीक है, वेदर राइट ऑफ सब्रोगेशन इज अवेलेबल, द आंसर इज नो। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अप्रूवल कब लेना है? Plan. प्रायर टू द अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। अभी लेटेस्ट चेंज आ गया है इसमें। वेदर इन द लास्ट स्टेज सेक्शन 12A एप्लीकेशन कैन बी एंटरटेन्ड। भाई एक तरफ जो है रेजोल्यूशन प्लान अप्रूवल की स्टेज में है, अभी सीडी क्या है, या प्रोमोटर अपनी 12A की एप्लीकेशन लेके आ गया, तो क्या होगा? उसको एंटरटेन करेंगे उस स्टेज पर या नहीं? Commercial wisdom चलेगी। क्योंकि क्या तो है, सीओसी की कमर्शियल विजडम चलेगी। हाँ नहीं, सेक्शन 12A की एप्लीकेशन का भी स्टेज है। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि भैया देखो, जब तक आपको आफ्टर जो इनविटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इशू हो गया, उसके बाद में आपको रीजनिंग देना है, लिखा ना रेगुलेशन में। वो रीजन देने के पीछे पर्पज यही है कि वो चाहते हैं कि भाई एक तरफ तो आप फॉर्म जी इशू कर रहे हो, आप नए रेजोल्यूशन एप्लीकेंट मंगा रहे हो, तो उसकी तरफ दूसरी तरफ आप 12A की एप्लीकेशन लगा रहे हो, तो दोनों चीजें तो नहीं चल सकती ना। ये है। अच्छा, उसके बाद में अब एक काम हम और करते हैं, जो हमारे केस लॉज है ना, उसमें से भी कुछ केस लॉज हम डिस्कस कर लेते हैं। ये मेरी पीपीटी मेरे ख्याल आपको नजर आ रही होगी, है ना? तो इसमें सबसे पहले हम चलते हैं कि सेक्शन 7 के ऊपर। ठीक है, सेक्शन 7 में आप ये बताइए कि कितने टाइप के लोग एप्लीकेशन लगा सकते हैं। सेक्शन 7 में कितने टाइप के लोग लगा सकते हैं एप्लीकेशन? क्रेडिटर्स। Financial. फाइनेंशियल क्रेडिटर्स तो है, बट देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। सो व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स व्हिच कैन मूव एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7? दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, Creditors in a class. राइट? Secured. So I would like to answer this question like this: financial creditors individually, ठीक है, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जॉइंटली, ठीक है, उसके बाद में इफ दे बिलोंग टू ए क्लास, देन देर इज ए मिनिमम स्टिपुलेशन। वो मिनिमम स्टिपुलेशन क्या है? वो सिंगल नहीं लगा पाएंगे। सो इफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स बिलोंग टू ए क्लास, तो कितना मिनिमम होने चाहिए? 10% of the total number of creditors or 100. 100 or 10%? हाँ, विच एवर इज लोअर या हायर? Lower. Minimum 10%. हाँ, विच एवर इज लोअर। ठीक है, लोअर ही है ना? Yes. चलिए, now suppose CIRP of a project has started, whether the home buyers can file an application under RERA, whether it is allowed, या रेरा की एप्लीकेशन भी अलाउड नहीं है? हाँ जी, Along with the CIRP application, sir? यस, No, sir, they cannot file, sir. दे कैन फाइल। Okay. क्योंकि क्या है, उमेश जी बोल रहे हैं प्लीज शेयर पीपीटी ऑफ केस लॉज। ओके, मैं अभी यहीं पर शेयर कर देता हूं, है ना? जस्ट अ मिनट, थैंक यू सर, कर दीजिए। अभी करता हूं। ये जो है,
एक स्टॉप शेयर करके यहाँ चैट होगी ना, चैट में शेयर कर देते। मिल गई जी पीपीटी, मैंने चैट बॉक्स में शेयर कर दी है। ये जूम का जो चैट बॉक्स है, उमेश जी हाँ जी, एक मिनट। मिल गई सर। मिल गई? जी जी। ओके। अच्छा, so first question was regarding section 7. Now another question is on RERA. So my question is, an application has already been filed, it has been admitted, and proceedings are going on. So whether home buyers can approach RERA also or not? Yes or no? अप्रोच कर सकते हैं, बता रहे थे सर आप। हाँ, अप्रोच कर सकते हैं। उसमें रूलिंग है कि भाई आप जो है ये रेरा वाला, ये पायोनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का केस है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ना, फोर्थ जजमेंट इसके अंदर है। ये देखिए, तो ये क्या कहता है कि भाई रेरा में भी आप जा सकते हो। सो हैज दैट बोथ कैन ऑपरेट टुगेदर, ईच हैविंग इट्स ओन स्कोप। अगर कुछ कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो उस केस में क्या होगा? कोर्ट विल प्रिवेल। ठीक है। कोर्ट ऑल्सो हेल्ड that even by a process of harmonious construction, RERA and the court must be held to coexist, and in the event of a clash, RERA must give way to the court. Apex court has upheld the amendment. ठीक है, चलिए। So this provided a clarity on this aspect. Suppose an arbitration proceeding is going on. In case of operational creditor, suppose if there is a case of a foreign supplier, if there is a foreign supplier who has supplied goods, ठीक है, to an Indian company. So first question, whether this foreign supplier can initiate section 9 application, yes or no? Yes sir. Yes, the answer is yes. So foreign supplier or Indian supplier, it doesn't make any difference. So foreign supplier, if he has supplied goods to an Indian company, so he can initiate application under section. Suppose some arbitration proceeding is going on. Then in that case, suppose this foreign supplier is having some arbitration proceedings also going on against the Indian company. Now, whether he will be able to file the application under section 9? हाँ जी, Yes sir. no. The answer is no. Because section 9 clearly bars an application if the matter is disputed. Because it says that it is not a recovery mechanism. Now, dispute could exist clearly. So, there is 100% dispute in case some arbitration proceeding is going on. भाई arbitration किस चीज का है? एक आदमी बोल रहा है कुछ, दूसरा बोल रहा है कुछ, तभी तो arbitration हो रहा है ना। या सूट, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग या सूट प्रोसीडिंग चल रही है तो हो ही नहीं सकता सेक्शन 9 की एप्लीकेशन। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, देयर कुड बी ए सिचुएशन वेयर देयर इज नो डिस्प्यूट और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, स्टिल द डिस्प्यूट में एग्जिस्ट, ऐसा भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सूट या आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग ही चल रही हो, लेकिन अगर सूट और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चल रही है तो 100% नहीं हो सकती सेक्शन 9 की एप्लीकेशन। ठीक है, अगर अदरवाइज भी डिस्प्यूट है तो भी सेक्शन 9 की एप्लीकेशन नहीं हो सकती। अच्छा, मान लीजिए कि सीआईआरपी प्रोसेस, सीआईआरपी शुरू हो गई किसी कंपनी की। ठीक है, तो सीआईआरपी जब शुरू हो गई तो ये जो मॉरेटोरियम की कंडीशन है, मॉरेटोरियम की जो कंडीशन है सेक्शन 14 है ना, तो सेक्शन 14 की जो कंडीशन है मॉरेटोरियम वाली, क्या वो पर्सनल गारंटर पर अप्लाई होंगी या नहीं होंगी?
नहीं नहीं होगी सर। नहीं होगी, राइट। सो मॉरिटोरियम डज नॉट अप्लाई टू पर्सनल गारंटर, स्पेसिफिकली एक्सक्लूजन है, ठीक है। अच्छा, लिमिटेशन एक्ट लगता है या नहीं लगता है आईबीसी वाले केसेस में? लगता है सर। ओके, सपोज देर वाज ए डेट विच वाज टेकन इन 2011, एक डेट लिया था कंपनी ने 2011 में, डिफॉल्ट हो गया सपोज 2011 में, तो क्या उसकी एप्लीकेशन आईबीसी में लग जाएगी या नहीं लगेगी? हाँ जी, नहीं लगेगी सर, अभी अभी सर हाँ अभी नहीं लगेगी सर। अभी नहीं लगेगी, बिल्कुल ठीक है। देर इज ए प्रोविजन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले, अगर कंडोनेशन ऑफ डिले लेकर डिले कंडोन करा लेता है वो कोर्ट से तो लग सकती है, ठीक है। क्योंकि कंडोनेशन ऑफ डिले से क्या होता है कि वो डेट रिवाइव हो जाए। देर इज अनदर सिचुएशन, सपोज देर आर टू कंपनीज, ठीक है, कंपनी ए एंड कंपनी बी। कंपनी ए इज हैविंग लैंड, ठीक है, और कंपनी बी बी इज इनटू डेवलपमेंट, ये डेवलपर है। बोथ आर बोथ आर रिलेटेड पार्टीज, ठीक है, दोनों रिलेटेड पार्टीज। भाई होता है ना, जैसे डीएलएफ ग्रुप है, डीएलएफ ग्रुप में क्या, जितने भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, लैंड बैंक एक कंपनी में रखती हैं, डेवलपमेंट दूसरी कंपनी में करती हैं। नाउ सपोज ये जो कंपनी बी है, जो डेवलपर है, इसने लोन लिया हुआ है, ठीक है, ऑन द सिक्योरिटी ऑफ लैंड। लैंड किसकी मॉर्टगेज की हुई है, कंपनी ए की। सिचुएशन समझ गए आप? एक रियल एस्टेट ग्रुप है, ठीक है, उस रियल एस्टेट ग्रुप में दो कंपनीज हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए में लैंड है, कंपनी बी में डेवलपमेंट के काम होते हैं, ठीक है। अब कंपनी बी जो डेवलपर है उसने लोन लिया बैंक से और लैंड मॉर्टगेज कर दी कंपनी ए की, ठीक है। अब बाद में कंपनी ए की सीआईआरपी शुरू हो जाती है सपोज। अब कंपनी बी के जो जिन्होंने लोन दिया था वो कहते हैं भाई हमें भी इसकी सीओसी में शामिल करो, कंपनी ए की सीओसी में। तो वेदर इट इज अलाउड? इट बी अलाउड सर। नो, इट इज नॉट अलाउड। क्योंकि क्या है, बोथ आर इंडिपेंडेंट कंपनीज। यही केस है बिल्कुल सेम टू सेम आपका इसका अनुज जैन आईआरपी फॉर जेपी इंफ्राटेक वर्सेस एक्सिस बैंक, ठीक है। ये केस हमारा सेक्शन ये नंबर 9 है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, यही केस था। से देख लेते हैं क्या हुआ इस केस में। केस इसमें ये था कि आईआरपी प्रेफर्ड एन एप्लीकेशन seeking orders for avoidance of the impugned transactions whereby several parcels of land were put under mortgage with the lenders of Jayaprakash Associates Limited, the holding company of JIL, ठीक है। दो कंपनी है, JIL हमारी कौन सी है, बी है, और होल्डिंग कंपनी है मतलब वो जेपी इंफ्राटेक है जिसके पास लैंड बैंक था, वो कंपनी ए है। यही सेम सिचुएशन जो मैं डिस्क्राइब कर, ठीक है। अब इन्होंने ये कहा कि भाई कुछ जो है आपने लैंड पार्सल्स को मॉर्टगेज कर दिया, ड्यूरिंग सीआईआरपी। अब सीआईआरपी किसकी शुरू हुई, जेपी इंफ्राटेक की। तो जेपी इंफ्राटेक में ये जो बैंक थे आईसीआईसीआई बैंक एंड एक्सिस बैंक, इन्होंने बोला कि भाई हमें भी एफसीज बनाओ, किसके, जेपी इंफ्राटेक के। बट आईआरपी डिड नॉट एग्री एंड डिक्लाइन टू रिकॉग्नाइज देम एज सच, ठीक है। और बैंकर्स ने एप्लीकेशन लगा दी सेक्शन 60 सबसेक्शन 5 में, ठीक है, बिफोर एनसीएलटी असर्टेनिंग देयर क्लेम टू बी रिकॉग्नाइज्ड। और लेकिन एनसीएलटी ने वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, ठीक है। क्वेश्चन ये आया कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं, जो लैंडर्स हैं डेवलपर के, ठीक है, इसमें क्या था, दो कंपनी थी, जेपी इंफ्राटेक में लैंड बैंक था और जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड एक्सिक्यूट कर रही थी। तो इसमें ये कहा, क्वेश्चन ये आया कि वेदर द रिस्पोंडेंट्स lenders of Jayaprakash Associates Limited
could be recognized as financial creditors of the corporate debtor, JP Infratech, on the strength of the mortgage created. ठीक है, तो ये इसमें क्वेश्चन था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इट इज ए प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन. ठीक है, so court held that mortgage deed in question entered by GIL to secure the debt of Jayaprakash Associates Limited obviously amount to creation of security interest in favor of Jayaprakash Associates Limited. It also noted that JIL was also the operational creditor and was providing financial, technical and strategic support to GIL in various ways. ठीक है, चलिए. अच्छा, जैसा आपने अभी देखा था सेक्शन 7 में, ये जो अमेंडमेंट आई थी हमारी, अमेंडमेंट एक पर्टिकुलर टाइम पर आई थी, है ना, ये नॉट लेस देन 100 और नॉट लेस देन 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ अलॉटेज विच एवर इज लेस. अब इस केस में क्वेश्चन ये आया, इन्होंने कहा था कि भाई जब ये अमेंडमेंट आई कि भाई जो पुरानी एप्लीकेशंस हैं उसको भी आप 1 महीने के अंदर जो है दोबारा ये कंडीशन फुलफिल कर दो, नहीं तो वो दे विल बी ट्रीटेड एज विथड्रॉन. तो दिस वाज आल्सो चैलेंज. तो उन्होंने कहा कि भाई कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ये दिस इज परफेक्ट लॉ. एक और केस लेते हैं. सपोज CIRP of a company is going on, directors have signed certain checks. ठीक है, तो वेदर एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट द डायरेक्टर्स अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. आपको पता है सेक्शन 138 लग जाता है ना, तो उसमें पर्सनल लायबिलिटी आ जाती है. तो वेदर ड्यूरिंग CIRP डायरेक्टर्स के अगेंस्ट में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में एक्शन हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा सर. Yes, it is allowed. No action can be taken against the company, but the action against the directors is allowed. ठीक है, तो उनकी पर्सनल लायबिलिटी हो जाएगी डायरेक्टर्स की इन केस ऑफ चेक बाउंसिंग ड्यूरिंग मॉरेटोरियम. ठीक है, सेक्शन 14 में और भी इश्यूज हैं कि सपोज देर इज देर इज ए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी. ठीक है, एक कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है और फिर वो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनकी इलेक्ट्रिसिटी परचेज कर रहा है, उनके बीच में पावर परचेज एग्रीमेंट है. ठीक है भाई, क्या होता है, प्राइवेट पार्टीज भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं और उनसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स खरीदते हैं, पावर परचेज एग्रीमेंट होता है आपस में. अब क्वेश्चन ये है कि वेदर ड्यूरिंग CIRP दिस पावर परचेज एग्रीमेंट कैन बी टर्मिनेटेड और नॉट. पहला क्वेश्चन, whether a power purchase agreement which is entered into between a power generation company and the electricity department could be terminated during moratorium. This is the first question. No, it can't be terminated. It can be terminated, but we have to see the grounds. What were the grounds to terminate the power purchase agreement? If the ground to terminate was solely insolvency, then it cannot be terminated. But if they have violated some other conditions, then it can be terminated. There are more than one case laws on this. One is regarding this power purchase agreement. Another is regarding this aircrafts. तो एयरक्राफ्ट में भी जैसे DGCA है, अब DGCA बहुत सारे एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट का लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं, है ना. इफ इट इज प्योरली ऑन अकाउंट ऑफ इंसॉल्वेंसी तब तो नहीं हो सकता CIRP में, है ना. बट इफ द ग्राउंड्स आर ऑन सम अदर ग्राउंड तो फिर हो सकता है. अब जैसे ये वाला केस था गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, इस केस में क्या हुआ था, इस केस में ये हुआ कि इनके बीच में एक पावर परचेज एग्रीमेंट था. किस किस के बीच में? गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और एस्टन फील्ड सोलर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड. ठीक, अब इसमें क्या हुआ कि इन्होंने एक जो एस्टन फील्ड थी, इन्होंने सेक्शन 10 की एप्लीकेशन
लगा दी थी। ठीक है। और गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने इनका पावर परचेज एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया कि भाई आपने सेक्शन 10 की एप्लीकेशन लगा दी है, तो ये जो है हम पावर परचेज एग्रीमेंट कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है। तो एनसीएलटी ने कहा कि जो क्लॉजेज है पावर परचेज एग्रीमेंट की, दे कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन ए हायर पेडेस्टल देन द प्रोविजंस ऑफ आईबीसी। क्योंकि देखो कंपनी का पर्पस क्या है बेसिकली, कि आपको एज ए गोइंग कंसर्न रखना है ड्यूरिंग सीआईआरपी, अदरवाइज खरीदेगा कौन कंपनी को? जिस कंपनी में पावर परचेज एग्रीमेंट ही नहीं है, उसको कंपनी को खरीदेगा कौन? है ना? तो उसने ये कहा कि भाई इफ इट इज सम ऑन सम अदर ग्राउंड तब तो हो सकता है, लेकिन अगर इफ यू आर टर्मिनेटिंग द पावर परचेज एग्रीमेंट सोनली ऑन अकाउंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, तो देन इट इज नॉट। ठीक है। तो एनसीएलटी ने क्या कहा कि गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड अटेम्प्टेड टू टर्मिनेट द पीपीए ऑन द सोल ग्राउंड दैट द सीआईआरपी हैज बीन इनिशिएटेड। तो उन्होंने कहा भाई आपको तो पावर ये अपना इसको गोइंग कंसर्न रखना है। ठीक। इसी तरह से एक और रिलेटेड इशू आ सकता है इसमें। क्या इशू आएगा कि सपोज देर इज ए सप्लायर। ठीक है। सपोज इट्स ए पावर जनरेशन यूनिट। ठीक है। कोल से मान लीजिए अपनी टरबाइन चलाते हैं, एक कोल सप्लायर है, और कोल सप्लायर बोल रहा है कि भैया मेरे पूरे पैसे दो। कंपनी सीआईआरपी में है, आरपी बोल रहा है कि जी ऐसा है, आप जो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट के बाद वाले पैसे वो अभी ले लो और बाकी के लिए आप क्लेम रेज कर दो। वो कह रहा है नहीं जी मुझे कुछ नहीं पता आईबीसी वगैरह क्या होती है, मेरे को तो पूरे पैसे दो तो मैं आगे आगे कोल सप्लाई करूंगा, वरना नहीं कर। टोटल ड्यूज उसके हैं 40 lakhs। 20 lakhs बिफोर इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट है और 20 lakhs आफ्टर द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट है। तो आप क्या करोगे उस केस में? आप आईआरपी हो। हाँ जी। क्वेश्चन समझ गए ना आप? क्वेश्चन समझ गए कि नहीं, पहले तो ये बताइए। रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन इज देर इज ए कोल सप्लायर, company is into CIRP. Now the coal supplier is saying, you clear my 100% dues before I further supply you the coal. But the RP is saying that you claim the dues up to the insolvency commencement date by filing the claim form, and current dues we are okay to clear them. What will be your decision? सही है, यही कर सकते हैं। हाँ जी। आरती ने जो किया सही किया। आरपी ने किया, बिल्कुल सही किया। और अगर मान लीजिए वो कोल सप्लायर नहीं मानता तो आरपी क्या करेगा फिर? टर्मिनेट ही करवाना पड़ेगा ऑप्शन। हाँ जी। फिर तो कोल सप्लायर की सर्विसेज टर्मिनेट करनी होगी ना सर, अगर वो सप्लाई देने को तैयार नहीं है। आर्टिस्ट सीआईआरपी के पहले के एक्सपेंसेस तो बियर कर ही नहीं सकता वो तो। Right. claim- So, very good. So, even IRP or RP can amend the terms of the contract. He can terminate the agreement also. ठीक है ना? उसके पास पूरी पावर है। Now, suppose there is a ineligible resolution applicant. ठीक है? 29A में suppose a person is supplier, sir, if the coal supplier is threatening that I will stop supplying, what the RP can do? and the What RP can do if coal supplier say I will stop supplying? no, actually we have to go as per the He is mandate in a of position IBC. to. We have to go as per the mandate of IBC. In case he doesn't agree, then he will cite the relevant provisions that okay, you cannot, because it is a critical input, so you cannot supply. ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो that is the only coal supplier Yeah, that is the in only coal that supplier, region. and he is stopping the coal supply. The steel plant will No, come in to that stand. case, he will approach the adjudicating authority because it is the adjudicating authority is the NCLT. So he will approach the NCLT and he will seek directions. ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है ना कि वो उस रीजन में वो सोल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर है, ऐसा भी हो सकता है ना? And if the COC agree कि let pay his full dues, then there is no issue. नहीं, सीओसी भी एग्री नहीं कर सकते। सीओसी ऑल्सो कैनॉट गो बियॉन्ड लॉ। सीओसी क्या है? सीओसी तो कब सीआईआरपी के सीआईआरपी से पहले वाले डिसीजन थोड़ी ले लेगी, सीआईआरपी से पहले के पीरियड के।
जब से सीआईआरपी शुरू हुई है उसके बाद ही वो कर सकती है ना, उससे पहले वाले नहीं कर सकते। देखिए उसके पास दो तीन ऑप्शन है, जैसे निशा जी ने बताया। पहला, अगर उसके पास अल्टरनेट सोर्सेज अवेलेबल है तो उसका एग्रीमेंट टर्मिनेट कर देंगे, दूसरे को इनवाइट कर लेंगे। लेकिन अगर मान लो सोल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर है और कोई है ही नहीं उसमें, या वो चीज ही ऐसी है कि वो वही बनाता और कोई नहीं बनाता, तो उस केस में फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अप्रोच करेंगे और जो उसका डिसीजन होगा ओके। अनदर क्वेश्चन, देयर इज ए पर्सन हु इज इनएलिजिबल अंडर 29A। ठीक है, एक पर्सन है जो इनएलिजिबल है अंडर 29A। CIRP could not be completed and the company went into liquidation. Now there is an auction. So whether the property can be sold to that person who was ineligible under 29A? No. No. ठीक है, even he cannot be a party to a scheme of compromise or arrangement. मतलब 29AC CIRP तक ही नहीं होगा, it extends even beyond that. कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की स्कीम भी वो नहीं ला सकता और वो लिक्विडेशन में भी कुछ सामान नहीं खरीद सकता। अच्छा, लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग क्लेम क्या है? लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ क्लेम कुछ आइडिया है किसी को? क्या है लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ क्लेम्स? Sir, 7 ड्यूरिंग days before सीआईआरपी, the, ड्यूरिंग सीआईआरपी during 30 days, sir. 30 डेज कहाँ है? the claim can be admitted up to 7 days before the meetings, before COC meeting in which the resolution plan is approved or the liquidation is approved. Actually, there are various dates. First date is within 40 days from the insolvency commencement date. ठीक है, पहली पहली लाइन तो ये है। And now suppose the claim doesn't come. Second line क्या है? 90 days from the insolvency commencement date or before the issue of invitation of expression of interest, whichever is later. ठीक है, ये दूसरी टाइमलाइन है। और तीसरी टाइमलाइन क्या है? ए मीटिंग ऑन द रेजोल्यूशन प्लान, उससे 7 days बिफोर ऑल्सो क्लेम्स कैन बी एंटरटेन्ड। लेकिन उस केस में सिचुएशन क्या होगी? आरपी उन क्लेम्स को दो पोर्शन में क्लासिफाई करेगा, एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल। जो एक्सेप्टेबल होंगे उनको सीओसी के सामने रख देगा मीटिंग में और फिर कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन भी लगाएगा बिफोर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, और जो नॉन एक्सेप्टेबल है वो उसमें वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएगा। तो ये प्रोविजन है, ये हमें ध्यान में रखना है। ये अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है और ये क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ फैसिलिटेटर क्या है, कुछ आइडिया है? और कितने मिनिमम होने चाहिए क्लास ऑफ क्रेडिटर्स जिसमें फैसिलिटेटर अपॉइंट हो सकता है? 1,000, sir. Minimum Yes. 1,000. So not less than 1,000. If the number of creditors in a class And are then not less than 1,000, then facilitators can be appointed. Maximum कितने facilitator हो सकते हैं? How many? 5, sir. Maximum 5. ठीक है। And what will be the primary role of this facilitator? Primary role क्या रहेगा इसका? Bridge between the class of creditors and the authorized representative. Right. So he will be acting as a bridge between the AR and class of creditors. और इसको फीस भी पेबल है क्या? Yes, sir. 20% of the fee payable to authorized representative. राइट, 20% ऑफ द फीस। अच्छा, अभी जो हमारा एआर है उसकी फीस में भी कुछ चेंज आया है रिसेंटली। क्या चेंज आया है वो? व्हाट इज द चेंज? 20,000 से 30,000 per meeting. नहीं, अमाउंट तो है ही, अमाउंट के अलावा नाउ हिज फीस विल बी पेएबल ऑन 2 अकाउंट्स। नंबर 1, एक तो वो मीटिंग करेगा अपनी क्लास ऑफ क्रेडिटर्स के साथ में, ठीक है, और एक ये होगा कि ही विल बी रिप्रेजेंटिंग द क्लास ऑफ क्रेडिटर्स इन द सीओसी। ठीक है, फॉर रिप्रेजेंटेशन इन सीओसी मीटिंग उसको अलग फीस पेएबल है। फॉर अरेंजिंग मीटिंग्स बिटवीन द क्लास ऑफ क्रेडिटर्स एंड हिमसेल्फ उसके लिए अलग फीस है। तो पर सीओसी मीटिंग वो कितनी मीटिंग कर सकता है? 2 meeting. राइट, दो से ज्यादा भी कर सकता है क्या?
हाँ, लेकिन उसके लिए सीओसी का अप्रूवल राइट, दो से ज्यादा होगा तो सीओसी का अप्रूवल चाहिए। वेरी करेक्ट। नाउ अनदर क्वेश्चन, सपोज an operational creditor files his claim as financial creditor। ठीक है, मेरा क्वेश्चन सुनिएगा पहले। क्वेश्चन ये है कि एक ओसी है, अब उसने एफसी वाला फॉर्म भर दिया। आरपी ने उसको कहा कि भाई आप ओसी वाला फॉर्म भरो। मान लो वो नहीं भर पाया किसी वजह से, अमाउंट सब्सटेंशियल है, ठीक है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? और आरपी ने क्या किया, उसका क्लेम रिजेक्ट कर दिया, मतलब माना ही नहीं, ना उसको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में लिया, ना कहीं पर भी लिया, और रेजोल्यूशन प्लान पास हो गया। तो उस केस में क्या होगा? आरटी को उसका क्लेम एज एन ओसी लेना चाहिए था और राइट। फिर इसमें डिसीजन क्या आया? डिसीजन ये आया कि भाई वर्डिंग क्या लिखी है? वर्डिंग लिखी है ए पर्सन हु क्लेम्स टू बी। ये उस वो क्लेम कर रहा है कि वो फाइनेंशियल क्रेडिटर है। अब वो आरपी को देखना है या आईआरपी को देखना है कि वो फाइनेंशियल क्रेडिटर है या ऑपरेशनल क्रेडिटर है। मान लीजिए किसी ने कोई गलत फॉर्म भर दिया, तो वो उसको उस जो भी उसकी कैटेगरी है अप्रोप्रिएट, उसमें उसको कंसिडर कर सकता है। ऐसा नहीं कि उसको क्लेम ही इग्नोर कर देगा वो। ठीक है, ये आपका यमुना एयरवेज, यमुना अथॉरिटी वाला केस था ये। ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये केस था। ये 38 नंबर केस, ये केस था। तो इस केस में हुआ क्या, ये जो ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, इसने अपना क्लेम भर दिया एज फाइनेंशियल क्रेडिटर। ठीक है, appellant submitted a claim being unpaid installments and the claim was set up by the appellant as financial creditor। आरपी ने क्या कहा? आरपी ने उसको ओसी ट्रीट किया और ईमेल से उसको रिक्वेस्ट किया कि भाई अपना फॉर्म नंबर चेंज करके भरो, फॉर्म बी में भरो एज ऑपरेशनल क्रेडिटर। उसने क्लेम भरा नहीं। ठीक है, ये जो ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, इसने क्लेम दोबारा नहीं भरा। अब इसने क्या किया, इसने प्लान बी अप्रूव उसका इग्नोर कर दिया क्लेम, और सीओसी में लिखा कि भैया इसने कोई क्लेम फाइल ही नहीं किया। तो डिसीजन क्या आया? डिसीजन ये आया कि द यूज ऑफ द वर्ड्स ए पर्सन क्लेमिंग टू बी एन ऑपरेशनल क्रेडिटर इन द ओपनिंग पार्ट ऑफ रेगुलेशन 7 and the words a person claiming to be a financial creditor in regulation 8 indicate that the category in which the claim is submitted is based on the own understanding of the claimant. Thus, there could be a situation where the claimant in good faith may place itself in a category to which it does not belong. However, what is important is the claim so submitted must be with proof. As to what good form of proof is determined in sub-regulation 2. ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि भैया प्लान को दोबारा लाओ। तो फाइनल जजमेंट ये रहा इनका, द रेजोल्यूशन प्लान शैल बी सेंट बैक टू द सीओसी फॉर रीसबमिशन। अच्छा, चलिए और देख लेते हैं थोड़े से। एक और सिचुएशन देखते हैं कि सपोज सीडी इज ए पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, सीडी मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म है और गारंटर जो है वो कंपनी है। हो सकता है ऐसा, है ना? जिसने लोन लिया वो पार्टनरशिप फर्म है या प्रोप्राइटरी कंसर्न है ना? प्रोप्राइटरी फर्म ने मान लो लोन लिया और गारंटी दे दी एक कंपनी ने।
अब लोन का पेमेंट हुआ नहीं, तो उस केस में एप्लीकेशन कहाँ लगेगी? क्वेश्चन समझ गए आप? क्वेश्चन ये है कि प्रोप्राइटरी फर्म हैज टेकन ए लोन फ्रॉम अ बैंक, अब रीपेमेंट इज नॉट डन, देयर इज अ डिफॉल्ट बाय द प्रोप्राइटरी फर्म, गारंटी हैज बीन गिवन बाय ए कंपनी। प्रोप्राइटर के पास तो ज्यादा एसेट है नहीं, कंपनी के पास एसेट्स हैं, तो क्या डायरेक्टली कंपनी के अगेंस्ट में प्रोसीड कर सकता है बैंक, या पहले उसको प्रोप्राइटरी फर्म के अगेंस्ट में एग्जॉस्ट करनी पड़ेगी रेमेडी, फिर जाएगा? कैसे होगा, क्या होगा? डायरेक्टली कंपनी के अगेंस्ट प्रोसीड कर सकता है। राइट, वेरी करेक्ट। सो यू कैन प्रोसीड डायरेक्टली अगेंस्ट दी कंपनी। और एप्लीकेशन कहाँ जाएगी इसकी? पार्ट 2 में, पार्ट 3 में? पार्ट 2 में। पार्ट 2 में जाएगी, क्योंकि सीआईआरपी अब कंपनी की शुरू हो रही है। और यही केस था आपका लक्ष्मीपत सुराना वाला। तो लक्ष्मीपत सुराना में क्या कहा? लक्ष्मीपत सुराना में ये रहा कि भाई ये जो है कंपनी थी महावीर कंस्ट्रक्शन, और उन्होंने फिर केस शुरू किया लक्ष्मीपत सुराना के अगेंस्ट में, जो कि कॉर्पोरेट गारंटर था। तो क्वेश्चन ये था, कैन ए फाइनेंशियल क्रेडिटर इनिशिएट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अगेंस्ट ए कॉर्पोरेट गारंटर अंडर सेक्शन 7 इफ द प्रिंसिपल बोरोअर इज नॉट ए कॉर्पोरेट पर्सन? ठीक, चलिए। So corporate guarantors are independently liable under IBC even if the principal borrower is not a company. So financial creditors have the right to initiate CIRP against guarantors without first proceeding against the principal borrower. चलिए और देख लेते हैं। अच्छा, मान लीजिए एक कंपनी है, उसमें 1000 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। अब ये जो 1000 एम्प्लॉयज हैं, आईआरपी अपॉइंट हो गया, उसको लगता है यार मुझे तो 500 आदमियों की जरूरत है, 1000 तो चाहिए ही नहीं, ओवर स्टाफिंग है। तो वो ये कहता है भाई देखो ऐसा है, 500 जो एम्प्लॉयज हैं उनको तो सैलरी हम देंगे सीआईआरपी पीरियड में, बाकियों को नहीं देंगे, आप दूसरी कोई नौकरी ढूंढ लो। तो ऐसा हो सकता है क्या, या उसको रखने पड़ेंगे 1000 के 1000? क्वेश्चन सिंपल है, मेरे ख्याल समझ गए होंगे आप। हाँ जी, क्वेश्चन तो समझ गए ना मेरा? भाई आप एक कंपनी के आईआरपी अपॉइंट हो गए, उस कंपनी में 1000 एम्प्लॉयज हैं, आपको लगता है यार 500 से काम हो जाएगा, ये फालतू के भर रखे हैं बंदे। उसने कह दिया देखो भाई 500 को तो मैं सैलरी दूंगा, ठीक है, बाकी 500 अपना ढूंढ लो कुछ जुगाड़, तुम्हारे को ना मिलेगी सैलरी। ऐसा नहीं होगा सर, ऐसा होगा। ऐसा होगा सर। हाँ, वो ये कहता है कि भाई जो आपके, जिन्होंने काम किया है सीआईआरपी में, यही केस है आपका सुनील कुमार जैन वर्सेस सुंदरेश भट्ट। इस केस में क्या हुआ? इस केस में ये बोला कि भैया ऐसा है कि जिन्होंने काम किया है सीआईआरपी पीरियड में, उन्हीं की जो है वो सीआईआरपी कॉस्ट में इंक्लूड होगी, ठीक है। सर वो लेबर कोर्ट में आरपी के केस जाएंगे? अब वो जहां मर्जी जाए, नोटिस पीरियड देने। आरपी के केस जाएंगे वो फिर? भाई देखो ऐसा है, वो निकाल तो सकता है ना। पहले तो ये बताइए, क्या आईआरपी टर्मिनेट कर सकता है एम्प्लॉयज को ड्यूरिंग सीआईआरपी, या टर्मिनेशन इज नॉट अलाउड? पहले तो ये बता दीजिए। भाई आप आईआरपी हो, आपको लगता है यार ये तो फालतू के भर रखे हैं इन्होंने, तो आप उनको टर्मिनेट कर सकते हो या नहीं कर सकते? आईआरपी को सर?
हाँ, IRP या RP जो भी. Yes, sir. If the committee of creditors so decide, they can be removed, sir. Sir, Committee of creditors he has taken, ये he तो has taken over the management. RP की पावर है भाई. IRP या RP जो है, ही रिप्लेसेस द मैनेजमेंट, ही इज रिप्रेजेंटिंग द मैनेजमेंट ना भाई. मैनेजमेंट के पास तो पावर होती है ना. इसी तरह से IRP RP के पास पावर है. वो कॉन्ट्रैक्ट्स को अमेंड भी कर सकता है, पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को टर्मिनेट भी कर सकता है, एम्प्लॉयज को निकाल भी सकता है, एम्प्लॉयज को अपॉइंट भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है. So Supreme Court has clarified the intricacies that arose on the claim for payment of wages salaries before CIRP, during CIRP and in liquidation. तो इसमें क्या कहा? इसमें ये था, the issue was with respect to wages salaries of the workmen during CIRP period and the amount due and payable to the respective workmen employees towards pension fund, gratuity fund and provident. देखिए, जहां तक PF ग्रेचुटी वगैरह की बात है, ये तो फुल पेमेंट होगा. सारे के सारे केसेस में एक ही बात कही गई है. लेकिन अब बात यह है कि उनको सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो एक अलग क्वेश्चन है. देखो, PF ग्रेचुटी एक अलग बात है, लेकिन जिन्होंने काम ही नहीं किया CIRP पीरियड में, उनको थोड़ी सैलरी मिल जाएगी. उनकी जो सैलरी है वो CIRP प्रोसेस का पार्ट नहीं बनेगी. The appellant, that is workmen and employees, contended that the salary, wages and the dues payable to them during CIRP period will qualify as CIRP cost. इन्होंने कहा भाई तो CIRP cost का part है and are liable to be disbursed even prior to the amount distributed under section 53. ठीक है. Respondent ने क्या कहा? Wages and salaries claimed by the appellants who have done no work during CIRP period and have not assisted the RP or liquidator during CIRP would not fall within the parameters of CIRP cost. So conclusion क्या? कि claims towards wages and salaries for the period during CIRP can only be included in the CIRP cost if it is established that the IRP or RP managed the operations of the corporate debtor as a going concern and that the concerned workman employee actually worked during the CIRP and not otherwise. ठीक. चलिए, और एक आध केस और देख लेते हैं. अभी तो टाइम है, 5 मिनट और लगा देते हैं. आप IRP हो, ठीक है. आपके सामने 1000 होम बायर्स हैं, ठीक है. 1000 होम बायर्स में से कुछ बायर्स तो ऐसे हैं जिनको रेरा से डिक्री मिल गई है, ठीक है. कुछ ऐसे हैं जिन्होंने रेरा को अप्रोच नहीं किया. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ होम बायर्स. नंबर 1, 200 होम बायर्स आर सच कि दे हैव ऑब्टेन्ड डिक्री फ्रॉम रेरा, ठीक है. Another 800 are those who did not approach RERA और वो IBC में. Now as an RP, whether you can distinguish between these 2 types of home buyers or yes or no, ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन मेरा समझ गए आप? क्वेश्चन तो सिंपल है. क्वेश्चन ये है, there are 1000 home buyers. CIRP has started. 200 home buyers are such who have obtained decree from RERA and 800 they never approached RERA. As an IRP or RP, whether you can distinguish between these 2 types of home buyers, yes or no? This is the question. No, sir. Right. So you cannot distinguish. ये विशाल चेलानी वाला केस था. विशाल चेलानी वर्सेस देवाशीष नंदा. क्या बोला? In view of section 58F, no distinction is per se made out between different classes of financial creditors for the purpose of drawing a resolution plan, and by introduction of explanation to 58F,
home buyers and allottees of real estate projects are included in class of financial creditors. ठीक है. In the resolution plan presented during CIRP, a distinction was made between home buyers who had obtained RERA decrees and those who had not. The former were offered less favorable terms. तो जिनको रेरा की डिग्री मिल गई थी उनको कम फेवरेबल टर्म्स थे. तो ये चैलेंज कर दिया. अल्टीमेटली गया मामला सुप्रीम कोर्ट में. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. In said resolution plan, a distinction was made between home buyers who had opted or elected for other remedies, such as applying before RERA and having secured orders in their favor, and those who did not approach authorities under RERA. They were given the benefit of 50% better terms than that given to those who approached RERA or who were decree holders. तो इन्होंने ये कहा कि भाई no distinction is per se made between different classes of financial creditors for the purpose of drawing a resolution plan. ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया कोई डिस्क्रिशन आप नहीं कर सकते बेस्ड ऑन रेरा डिक्रीज. द कोर्ट हेल्ड दैट ऑब्टेनिंग ए डिक्री अंडर रेरा डज नॉट ऑल्टर द स्टेटस ऑफ ए होम बायर एज ए फाइनेंशियल क्रेडिटर. देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन होम बायर्स बेस्ड ऑन वेदर दे हैड ऑब्टेन्ड रेरा डिक्रीज इज अनजस्टिफाइड. ठीक है. So this judgment clarifies that home buyers who have secured decrees under RERA remain financial creditors under IBC and must be treated equally in insolvency proceedings. It ensures uniform treatment of all home buyers, reinforcing their right and providing clarity on the interplay between RERA and the IBC. ठीक है. चलिए और देख लेते हैं एक आधा. अभी तो टाइम है थोड़ा. पहले क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सपोज ए पर्सन बिकम्स ए सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट. ठीक है. एक सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन गया. क्या उसको कोई परफॉर्मेंस गारंटी देनी पड़ती है टू एंश्योर इंप्लीमेंटेशन? भाई उसने तो वायदे कर दिए. ही हैज मेड मेनी प्रॉमिसेस इन द रेजोल्यूशन प्लान. अब वो फुलफिल करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए वेदर ही कैन बी आस्क्ड टू गिव परफॉर्मेंस बैंक गारंटी. बैंक गारंटी देनी पड़ सकती है क्या उसको? यस सर. यस. तो आप कह सकते हो कि भाई परफॉर्मेंस बैंक गारंटी. अच्छा, एक केस में आपको बताता हूं जिस केस में क्या हुआ. ही वाज द सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट. उसने बैंक गारंटी दे दी, लेकिन रेजोल्यूशन प्लान में ये टर्म्स था कि भाई उसको कुछ इन्फ्यूजन ऑफ फंड्स करना है. अब उसने फंड्स तो इन्फ्यूज किए नहीं. उसने बोल दिया कि भाई मैंने जो गारंटी दे रखी है ना उसी में से पैसे काट लो. इज इट परमिटेड? मेरा क्वेश्चन समझ गए आप? देयर इज ए सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट हु हैज सबमिटेड ए बैंक गारंटी टू एंश्योर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट. नाउ इन द रेजोल्यूशन प्लान ही हैज promised that okay he will infuse 100 crores. वो बोल रहा है जी मेरी तो 200 करोड़ की बैंक गारंटी पड़ी है, उसी में से एडजस्ट कर लो 100 crores. तो whether it is permitted or not, this is the question. Not permitted, sir. Very correct. So this is not permitted, and this was the case in this consortium of ये जेट एयरवेज वाला केस था. ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस द कंसोर्टियम ऑफ मुरारी लाल जलान एंड फ्लोरियन फ्रिस एंड अनदर. तो क्या हुआ इसमें? ये कहा कि भाई अनकंडीशनल कमिटमेंट था. क्या था? टू इन्फ्यूज अप्रोक्सीमेटली 1090 करोड़ इन कैश. इसने रेजोल्यूशन प्लान में बोला था कि भाई मैं 1090 करोड़ कैश में इन्फ्यूज करूंगा और जो 50 करोड़ के एम्प्लॉयज के ड्यूज क्लियर कर दूंगा. ठीक है. लेकिन अब इसने बाद में क्या कहा? इसने ये कहा जी मैंने तो गारंटी दे रखी है, उस गारंटी से एडजस्टमेंट कर लो. Adjustment of performance bank guarantee. The court examined whether PVG of 150 crores could be adjusted against the first tranche payment of 350 crores as proposed by JKC. It held that such an adjustment was impermissible under the terms of the resolution plan and the IBC.
ठीक है. The court observed that JKC failed to fulfill its obligations under the resolution plan, including the infusion of the first tranche of 350 crores and payment of CIRP cost, such as airport dues. तो बाद में डिफॉल्ट हुआ तो उन्होंने कहा भाई अब लिक्विडेशन ही कर दो, तो रेजोल्यूशन प्लान को कैंसिल कर दिया और लिक्विडेशन कर दिया कंपनी का. ठीक है. तो चलो आज कुछ ना कुछ तो हमने कुछ इंस्टेंसेस तो डिस्कस किए, है ना. चलिए, इससे पहले कि बाकी भी लोग निकल लें, मैं भी निकल ही लेता हूं. ओके जी, गुड नाइट.